Okay, so Bacho, in the last class, we were talking about the extraction of metals, and we talk about the extraction of aluminum metal by electrolysis of its molten oxide, right, in the presence of cryolite. And then after that, we talk about the extraction of iron from its oxide, right, by the reduction of carbon monoxide. In the presence of carbon monoxide, we reduce iron oxide. And now, in today's class, we just start with the extraction of copper, right? If you talk about the extraction of copper, bacho, from its oxide, so it will be like extraction of copper from its oxide. So we know that that copper is least reactive metal, and it is even less reactive than hydrogen as well. So we can extract copper from its oxide by the presence of hydrogen gas, right? So what we need to do, we just need to see over here, but so that what we need to do over here, we can use a test tube over here, right? And by the help of test tube, but so we can use what, the passage of hydrogen, right? From here, we need to pass hydrogen gas from here. It is the place from where you need to pass hydrogen gas, and this is also one of the place जहां से आपके पास बाय प्रोडक्ट निकल सकती है. So this is one of the experimental setup, you can say, that by which we can separate copper oxide into coppers. For suppose this is copper oxide. This is copper oxide. We have, what we need to do, we need to heat this. We need to heat this so the copper oxide will be like a little bit show the faster reaction, right? So this is the heating from the bottom of the copper oxide. This is copper oxide, right? Copper to oxide, because it is a transition metal, so you need to mention the oxidation state over there. So this is copper to oxide, right? And then we need to pass hydrogen gas from here, hydrogen gas, right? So once you are passing hydrogen gas into copper oxide, but so what is going to be happen, you need to know this, that copper is less reactive than hydrogen, so definitely hydrogen will displace copper and it will form copper and water molecules, right? So the water which is going to be eliminate is from here. यहाँ से water vapors आपके पास क्या हो जाएंगे, separate हो जाएंगे. Now you can see this, but so what's going on over here, we already talked about this in redox reaction. This is copper oxide which is going to be reduced by the loss of oxygen, and this is hydrogen which is going to be oxidized by gain of oxygen, right? Acho? Yes, Bacho, is that right? Yes, sir. Yes, sir. And the one which is going to be oxidized is always a reducing agent. So you can say that the hydrogen over here is reducing agent, and the one which is going to be reduced is actually what? Oxidizing agent, right, Bacho? So this is what you need to know about this experiment. Sometime examiner can even connect this with a huge shaped like experiment. ये इसको इसके U shape के साथ connect कर सकते हैं, एक U tube के साथ. उसमें we just need to show the presence of water or hydrogen, right? So you need to show this reaction. First of all, you need to keep remember कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर hydrogen gas replace कर रही है किसको, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो कनेक्शंस होते हैं उसके लिए आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता होना चाहिए, उसके लिए आपको जो है लिटमस पेपर के ऊपर जो है इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना? कोई अगर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है तो पीएच पेपर को भी आपको पता होना चाहिए, पीएच पेपर क्या शो करेगा, ठीक है ना? इस तरह की बाकी चीजें आपको
इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अगर वो कोई सेटअप बराबर में लगा के दिखा देता है. सो वी विल हैव डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ दिस सेटअप एज वेल. सो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सेकंड स्टेप क्या पता होना चाहिए एक्स्ट्रा. ठीक है ना. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर ओवर हियर इज दिस, दैट यू नीड टू keep passing hydrogen gas, keep passing hydrogen gas till the copper is cooled down. जैसे फॉर सपोज आपके पास कॉपर ऑक्साइड जो था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में. फॉर सपोज अगर आपके पास जो कॉपर ऑक्साइड था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है किसमें, कॉपर में बच्चों. सो आपने हीटिंग बंद कर देनी है. डेफिनेटली हम उसको हीट करके क्या करेंगे, जब कॉपर बन गया है हमारे पास तो हम हीटिंग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. बट आपने हाइड्रोजन गैस जो है कंटिन्यूसली उसमें से पास करनी है. अगर आपके पास कॉपर कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है इन एलिमेंटल फॉर्म, तो आपने फिर भी हीट हाइड्रोजन गैस को पास करना है, उसका फ्लो पास करना है. उसकी वजह क्या होगी कि अगर आपने हॉट कॉपर को ऐसे ही छोड़ दिया और हाइड्रोजन गैस आपने वहां से हटा ली, तो क्या होगा आपके पास के टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन एंटर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एयर. तो वहां पर वो फिर दोबारा से हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना सकती है. ठीक है ना. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन टिल द कॉपर इज गोइंग टू बी कूल डाउन. जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, जब तक आप हाइड्रोजन का फ्लो रखें ताकि वहां ऑक्सीजन ना जा सके और दोबारा से कॉपर ऑक्साइड बनने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो चांसेस हैं, वो बिल्कुल भी ना रहे. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. So this is the experiment for the separation or for the extraction of copper from its oxide. ठीक है. इसको जल्दी से अपने पास लिख लो. इसमें से कोई चीज ऐसी है जो पूछनी है आपने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So I am here to explain your answers, right? Yes, every one of you. Is that clear to all of you? Yes, sir. Okay, so one more extraction जो कि आपके पास हो सकती है किसकी, जिंक की हो सकती है. लेकिन वो जिंक की एक्सट्रैक्शन जो है आपके पास, यू नीड टू कीप रिमेंबर इन दिस वे कि आपके पास एक जिंक की ओर होती है. दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, extraction of zinc from its ore. जिंक की जो ओर होती है उसका नाम क्या होता है? दिस इज ओनली फॉर 0620 स्टूडेंट्स, राइट. ये उनके सिलेबस का पार्ट है, 5070 का पार्ट नहीं है. सो इट विल बी नोन एज जिंक ब्लेंड. एक जिंक ओर होती है जिसका नाम है जिंक ब्लेंड और ये होती है ZnS. तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, देखो बच्चों, हमें पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो व्हाट वी नीड टू डू, हमने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है. सो इट विल बी फॉर्म व्हाट, जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है ना. ये बन जाता है आपके पास. इसको बैलेंस करने के लिए we can write 2 over here, so it will be 2 zinc and 2 zinc. ठीक है. 2 सल्फर हो गया, so you can write 2 over here and 3 over here. अब हमारे पास बन गई है जिंक ऑक्साइड. ठीक है ना. कि जो जिंक ऑक्साइड है, we can treat this, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं किससे बच्चों, we can treat this with carbon, right? So if you treat this with carbon monoxide, so we need to know this, that हमारे पास जिंक बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी. Is that clear, बच्चों? And the problem of this process is actually these two gases. These two gases are acidic gases, so they are dangerous for the atmosphere. So we need to keep remember कि हमने इसको जो है सही से treat करना है. सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे ट्रीट करना है? You can even react it with what बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करा दोगे किसी भी बेस से, so definitely there will be neutralization reaction और आपके पास क्या हो सकती है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो सकती है और बचत हो सकती है इसकी. और इसके लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी सल्फराइजेशन. ठीक है ना. ये आप एयर एंड पॉल्यूशन में भी पढ़ लेंगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ. तो आप इसको अपने पास लिख सकते हैं. जो बच्चा 0620 का पेपर अटेम्प्ट करेगा वो अपने पास लिख सकता है. ठीक है.
और जो नहीं है 5070 वाले जो बच्चे हैं उनको जरूरत नहीं है इसको लिखने की, सो यू कैन इवन लीव दिस, राइट बच्चों। चले अब हम जरा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको देख लें मेटल्स को कि हमने कितना कर लिया है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप मेटल्स की बात करते हैं, so yes, 9.1 is saying that compare the general physical properties of metal and non-metals. If you talk about metals, they are electrically conductor, right? They have a good electrical conductivity and thermal conductivity. They are malleable and ductile. They are having high melting and boiling point. We discussed these physical properties in the start. And if you compare these physical properties with non-metals, so definitely non-metal does not have these properties, right? Describe the general chemical properties of metal limited to their reaction with dilute acids. We talk about this with cold water, steam, oxygen. We talk about this, right? Then uses of metal, they are saying that uses of metal, right? So uses of metals के भी हमने बात नहीं की है. We will talk about this in the last one. Then alloys की बात अभी हमने करनी है. We need to start alloys in today's class. Then reactivity series की हमने बात कर ली है. State the order of reactivity series. We talk about this, that potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, then carbon, zinc, iron, hydrogen, copper, silver, gold. We talk about this. Lead is no more in our reactivity series, right? So you need to keep remember कि lead मैंने लिखवाया हुआ था वहाँ पर क्योंकि वो मैजल वर्ड फिर complete नहीं होगा, इस वजह से वो lead मैजल मैंने लिखवाया वहाँ पर lead. Otherwise there is no more contribution of lead in the reactivity series now onwards, right? And then they are saying describe the relative reactivities of metals in terms of their tendency to form positive ions by displacement reaction. We talk about the displacement reactions. We do some practice questions of that as well. Describe the reaction if any of potassium, sodium, and calcium with cold water. We talk about these reactions as well in periodic table and in metals as well. Magnesium with steam, we talk about that. Magnesium, zinc, iron, copper, silver, and gold with dilute hydrochloric acid. We know that silver, gold, and copper are not capable enough to react with dilute hydrochloric acid, but the rest of the reactions we talk about in acid and bases as well, and in this chapter as well, right? And then explain the apparent unreactivity of aluminum. This is what we need to talk about in today's class. Yes, and then the order of reactivity from given set of experiments. ठीक है, चले अगर आप एल्युमिनियम की बात करते हैं तो बच्चों you can see this that aluminum is a highly reactive metal because you can see this the reactivity series is saying that the first highly reactive is group 1 metals, right? And then group 2 metals, and then just after that we have aluminum, and aluminum is too reactive than carbon, right? And we need to use what? Electrolysis method to separate it. So it's showing that how reactive aluminum is the element, right? But in terms of reactivity, if you talk about, so it's too reactive. तो करता क्या है ये भाई? ये करता ये है कि ये फौरन से रिएक्ट कर अपने ऊपर ऑक्साइड के लेयर बना लेता है, ठीक है ना? So इसका प्रॉब्लम क्या है? For suppose you have this is one of the aluminum metal rod you have. So whenever you expose this into the air, तो क्या होता है आपके पास? इसके ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. इसके ऊपर क्या आ जाती है? इसके ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. ऑक्साइड ऑफ aluminum इसको क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, right? So this is aluminum metal. This is aluminum metal inside, and just you expose this into the atmosphere, you will see that the layer of its oxide इसके ऊपर आ जाती है. And what is this? This is aluminum oxide, Al2O3, which is more stronger, right? Aluminum से भी ज़्यादा stronger है. So it will see, you can say that it will save it from the atmosphere, और इसको खराब नहीं करती जैसे आयरन होता है. If you talk about iron, तो अगर उसकी ऑक्साइड्स बन जाती हैं, रस्टिंग हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है. लेकिन जब एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम के ऊपर आती है तो इट विल मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? सो यू कैन से दैट इट मेक्स एल्युमिनियम मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना? वो एल्युमिनियम मोर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और यू कैन से दैट इट विल बी inert as well, inert हो जाता है, और you can say that it will be unreactive हो जाता है. तो अगर आप चाहते हैं that this aluminum is going to be react, ये किसी भी एसिड के साथ या किसी और चीज के साथ रिएक्ट करे, so you need to remove this oxide layer first, then you can do the reactions of aluminum, right? So you can say that aluminum oxide
saves aluminum, right? Or you can say that it will make it unreactive by making layer on it, so you can say that it is one of the protective layer, right? You can say that this is one of the protective layer, right? So you can say that aluminum has a protected layer of its oxide on it, which saves it from the other reactions, right बच्चों? So if you want that कि ये reaction करे, so you need to remove this. जब ये remove करेंगे, then it will start reacting, right? Right बच्चों? So like a barrier, right? Yes, it's a barrier, like, okay. And you must need to know this, that aluminum oxide is actually amphoteric in nature as well. We talk about this in oxides as well, in acid and bases, that all the metal oxides are basic in nature except aluminum oxide and zinc oxide. So if you talk about the nature of this oxide, so this is amphoteric. It can even react with acid and it can even react with base. So if you want to remove this, so आप इसको जो है एसिड से भी रिमूव कर सकते हो, अल्कली से भी रिमूव कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दिस, व्हेन यू स्टार्ट रिमूविंग दिस फ्रॉम एसिड, so जैसे ही एल्युमिनियम मेटल जो है एक्सपोज होगा, so it can even react with acid as well ना. So you can even remove this from bases, क्योंकि bases का metals के साथ कोई reaction नहीं है, ठीक है ना. And if you don't want to remove by any chemical, so you can even remove this by knife or any other thing which is having a sharp edges, so you can even scratch that and you can remove that, okay. And you need to remember this, that the color is almost same color होता है ऑक्साइड का और एल्युमिनियम का, तो इतना डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा जब उसकी ऑक्साइड उसके ऊपर जो है कोटिंग कर लेगी. So you can say that aluminum oxide coat the aluminum and protect it from the atmosphere, and it is almost same, a little bit darker, right? Right, Yes, bachcho? sir. Yes, sir. Then we are moving towards corrosion, and then corrosion is one of the process which destroy metals, right? Corrosion is one of the process which destroy metals, and corrosion is all about rusting. It's all about rusting. जब भी कोई metal rust होता है तो वो तबाह हो जाता है, ठीक है ना. We are not talking about aluminum right now, we are just considering the example of iron over here, ठीक है ना. क्योंकि रस्टिंग इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ रस्टिंग जो एल्युमिनियम ऑक्साइड आपके पास बन रहा है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो कोरोजन नहीं कहलाएगी, ठीक है ना. तो कोरोजन इज ओनली व्हेन देयर इज अ रस्टिंग on the metal and the loss of metal will be occur, then this will be the corrosion. जब आपके पास metal क्या हो, loss हो, ठीक है ना. When there is a loss of metal, this will be known as corrosion, right? This is all about loss of metal. आपका metal जो है जाया होना चाहिए, खराब होना चाहिए, this will be the corrosion, right? And it's all about rusting. इसकी वजह से हो सकता है. And what is rusting? You need to keep remember that rusting is always occur in the presence of water and oxygen. जब तक ये दोनों नहीं होंगे rusting नहीं होगी. You need to keep remember this. If you want कि यार इस चीज पे rusting हो जाए, डेफिनेटली कोई चाहता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रस्टिंग करवाना, सो यू मस्ट नीड टू नो दैट कि आपके पास पानी और ऑक्सीजन दोनों एक साथ होनी चाहिए, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होती. इन दोनों में से किसी एक, कोई भी एक चीज होगी तो रस्टिंग नहीं होगी. रस्टिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों चीजें मौजूद हों, ठीक है ना. दोनों चीजों की मौजूदगी में रस्टिंग हो सकती है, एक चीज की मौजूदगी में नहीं होगी. दैट्स व्हाई द रीजन दिस इज द रीजन कि आप देखेंगे कि रेनी डेज के अंदर द chains of the bicycles and the other things around us, the grill in our houses and the rest of the things which are made up of iron is going to be rusted, right? Because rainy days में moisture content ज्यादा होता है air के अंदर, तो पानी और ऑक्सीजन दोनों एक साथ affect करते हैं irons को, ठीक है ना. And you need to keep remember the one who is living near the seaside and somewhere near the any contribution of water near over there, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास उस चीज पे रस ज्यादा लगेगा. जैसे फॉर सपोज वी आर लिविंग इन कराची, सो कराची इज वन ऑफ द कोस्टल एरिया, सो वी हैव सी नियर अस, तो हमारे यहाँ रस्टिंग ज्यादा हो जाएगी. जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ समंदर बहुत दूर है, तो वहाँ रस्टिंग कम होती है, बिकॉज उनके मॉइस्चर कंटेंट कम होता है एयर में. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. For suppose if you have iron, it's a simple iron, right? Simple iron जब आपके पास होता है, इसके अंदर अगर in the presence of water and oxygen आपके पास जब rusting होगी, तो this iron is going to be converted into iron 3 oxide. It is going to be converted into iron 3 oxide, and this should be hydrated. Hydrated means
there should be some water molecules as well, ठीक है ना। इन water molecules की वजह से ये क्या हो जाएगा, it's get rusted, और जब आयरन rusted होता है तो वो लॉस होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जो आयरन की चीजें होती हैं वो ग्रीन ब्राउन टाइप का उनके ऊपर जंग आ जाता है और फिर वो टूटना शुरू हो जाती हैं। दिस इज एक्चुअली द लॉस ऑफ मेटल। व्हेन द मेटल इज गोइंग टू बी लॉस्ट, दिस इज नोन एज corrosion, राइट बच्चों। Yes, sir. Then the precautions are very important for this. अब जरा मुझे आप लोग ये बताएं कि what are the precautions जो कि आप लोग करते हैं in rainy days to avoid the rusting of metals। क्या करते हैं आप लोग? Yes, any one of you? आप लोग कोई सी, जैसे किसी के पास अगर बाईसाइकिल हो या किसी के पास बाइक हो या किसी के पास कोई भी ऐसी चीज जो कि बारिशों में रस्ट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? बाईसाइकिल में बहुत आसान सा हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? एनीवन, बॉयज? कवर कर देते हैं किसी। यस यस, सबसे पहली चीज तो हम सर लोग क्या ऑयल, करते हैं? राइट? यस, हम लोग सबसे पहले तो प्लास्टिक कवरिंग भी करते हैं बहुत सारी चीजों की। बारिशों के अंदर हम अपनी बाईसाइकिल या हम अपनी बाइक्स वगैरह को क्या कर देते हैं, प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं, कार को प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं। उसके अलावा हम ऑयलिंग भी करते हैं। एग्जैक्टली, हम ऑयलिंग भी कर सकते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? और भी एक काम करते हैं ना हम लोग ग्रीसिंग भी करते हैं, राइट? सर इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं ना? यस, गैल्वेनाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट, राइट? वो एक अलग चीज है। ग्रीसिंग के अलावा जो जर्नल मेथड्स में आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा हम पेंट भी करते हैं। अगर आपको अच्छा, पता हो आपको, ये बैरियर मेथड है, राइट? यस, बैरियर मेथड्स हैं ये। इसके अंदर आपने जो है बैरियर मतलब आप जो है कनेक्शन तोड़ रहे हैं ना मेटल का पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ। आप चाह नहीं रहे हैं कि मेटल और पानी या मेटल और ऑक्सीजन और पानी एक साथ कंट्रीब्यूशन में आए, इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से। अगर वो इंटरेक्ट होंगे तो रस्टिंग होगी। आप उनको एक उनके दरमियान एक बैरियर लगा रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बैरियर जो कि हम कॉमनली लगाते हैं घरों के अंदर। इट्स वन ऑफ द गुड मेथड बट नॉट 100% एक्यूरेट। ऑयलिंग कर देते हैं हम। वी नो दैट पानी और ऑयल का जो है आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दे बोथ आर hating each other, right? तो हम ऑयल लगा देते हैं। grease is also working same as it is, and paint is also one of the, you can say that we are having a layer on metals। तो वो जो है कनेक्शन तोड़ देती है किसका, मेटल्स का ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो फिर भी रस्टिंग नहीं होती। हमारे घर में जब भी कोई दरवाजा ग्रिल विंडो लगती है, सो वी ऑलवेज नीड टू पेंट दैम, राइट? हम उनको पेंट कर लेते हैं जल्दी से। सो दीज आर द प्रिकॉशंस जो कि हम कर सकते हैं कॉमनली। इसके अलावा जो बहुत अच्छी आपके पास दो प्रिकॉशंस हो सकती हैं इज वन ऑफ इज गैल्वेनाइजेशन। एक होती है आपके पास गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन की जाती है, वी नीड टू डू गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, राइट? हम आयरन के अंदर क्या करते हैं, जिंक की गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि लेयर ऑफ जिंक हम उस पर क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, लेयर ऑफ जिंक, right? This is one of the method, you can say that, जिससे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं अपने मेटल को। and one more is known as sacrificial protection। one more is known as sacrificial protection। we need to do this as well, and this is what we need to place more reactive metal near that। more reactive metal हम क्या कर देते हैं, place कर देते हैं, जिसकी वजह से reaction more reactive हो जाता है। we know that more reactive metals are you can say that capable enough to lose their electrons first ना, तो वो अपने electrons lose करके oxidize हो जाते हैं, और जो less reactive होते हैं उनको वो save कर लेते हैं, right बच्चों? यस सर। for suppose आपके पास एक underground pipes है, ठीक है ना। this is underground pipe, this is underground iron pipe। whatever the use of this, we are not going to talk about that। underground iron pipe hai। if the underground pipes are, they are always in the land, definitely there will be oxygen, there will be water as well, so they can easily rust na। so what we need to do, we always place some magnesium blocks inside। हम उसके नीचे थोड़ा थोड़े गैप के बाद magnesium blocks रख देते हैं, so there will be iron and there will be magnesium as well। तो होता क्या है, magnesium is more reactive than iron, so it will lose its electrons and form magnesium ions, right? वो magnesium ions बना लेता है, but it prevents iron from rusting, right? So you can say that magnesium lose
its electrons and save iron from rusting. So that is why this is known as sacrificial protection. Magnesium is actually sacrificing itself and saving what? Iron from rusting. This is what sacrificial protection, right? And if you talk about the galvanization of zinc, so in car bodies, initially the iron bodies of car, we need to spray them with zinc. हम उसको zinc से spray करते हैं, और वो zinc spray किस लिए काम आता है? Zinc spray is just, you can say that there is a layer of zinc on the iron body, so it will save the interaction of iron bodies with moisture content and air, so वो उससे rusting से बचा लेता है. For suppose अगर आपके पास कार बॉडी है, ठीक है ना, कोई एक कार बॉडी है, उसके ऊपर आपने ग्रे कलर का स्प्रे कर दिया है. किसका? आपने इस कार बॉडी के ऊपर स्प्रे कर दिया है जिंक का, ठीक है ना. आपने जिंक का स्प्रे किया, सो इट्स व्हाट? गैल्वेनाइजेशन. इस बॉडी के ऊपर आपने बच्चों क्या किया? जिंक का स्प्रे कर दिया. इस पूरी बॉडी पे आपने जिंक स्प्रे कर दिया. So this is what? Galvanization. ये क्या कर रहे हैं आपके पास? You can see this is galvanization. ये पूरा galvanization है. लेकिन for suppose क्या हुआ आपके पास? कहीं से इस बॉडी के अंदर स्क्रैच लगा, किसी ने इसको चोट मारी या कहीं इसका एक्सीडेंट हुआ, तो उससे क्या हुआ? इसका एक पीस जो है वहां से इसका आप समझ लें कि उसकी जो कोटिंग थी जिंक की वो भी हट गई, ठीक है ना. Now you can see this. It is still not rusting. So this is what? This is sacrificial protection. This is what? Sacrificial protection. Zinc is more reactive than iron, तो वो उसको अभी भी rust नहीं होने दे रहा है. And this is what? This is galvanization. Right, बच्चों? The protecting layer of zinc onto the iron bodies is galvanization, and even after removing that layer, if the iron is not get rusted, so this means it is a sacrificial protection because zinc is more reactive than iron. So now it's oxidizing itself, not allowing iron to rust it. Right, बच्चों? So एक ही चीज में दोनों चीजें हैं. सही है? Yes, sir. Yes, sir. Any problem to any one of you? No, sir. So these are the methods by which you can protect your metals, right? उसके बाद आपके पास extraction of metals हैं बच्चों. तो extraction of metals की अगर हम बात करें, तो extraction of metals में you can see this इनकी जो ease of reduction है उसकी बात हमने करनी है. position हमने देखनी है. reactivities में we talk about that. हमने देखा है कि जो carbon ज़्यादा reactive हैं, they will be separated or extracted by the electrolysis of their molten oxides. और जो कार्बन से कम रिएक्टिव हैं, they can be extracted with the presence of carbon. और जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं, they can even extracted by hydrogen as well. Now over here in your syllabus 9.6, it's saying that extraction of iron from hematite in the blast furnace. We talk about this, the burning of carbon coke to provide heat and produce carbon dioxide. We talk about that. This is one of the fuel for the process. Then reduction of carbon dioxide to carbon monoxide. We talk about this, the formation of reducing agent. Then reduction, we talk about that. And then the thermal decomposition and the formation of slag. We talk about this. Then extraction of aluminum from its purified bauxite ore. We talk about the role of cryolite. It's used to decrease the melting point. It's used to save the cost of the process. Then white carbon anodes needs to be regularly replaced, because we talk about that at high temperature, they can react with oxygen and can form carbon monoxide and carbon dioxide. And then the half equations of that reactions, we talk about that. Bauxite ore की further आपके पास purification required नहीं है, ठीक है ना. So this is what 9.6 we have done, 9.5 we have done, 9.4 we have done, 9.2 and 9.3 is remain still, 9.1 is done. So the 9.3 is saying what? Describe an alloy as a mixture of metal with other elements, right? So let's talk about alloys. So if you talk about alloys, बच्चों, so alloys क्या होते हैं बच्चों? Alloys आपके पास होते हैं, these are actually mixture of metals. You need to keep remember, these are mixture of metals and sometimes some other elements. Mixture of metals and sometime other elements. Sometime बहुत कम होता है कि आपके पास कोई दूसरा element आ जाए. Even we can use carbon as well.
राइट, हम स्टील बनाते वक्त कार्बन भी यूज कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ alloy. We need to keep remember this, the structure of alloy. If you talk about a simple structure of metal, बच्चों, so the metals are having what? They are regularly arranged atoms, right, in a layer form, right? They are like this, or the same type of atom, same size, same color, same mass, everything will be same because it is a single element, right? But if you talk about alloys, so there will be a difference of the size of atom. So you can see this, when two different size of metals going to join or mix together, so there will be some different sizes of metal over there. So this will be the structure of alloy you need to keep remember, right? And this will be more stronger, this will be more stronger because the layers cannot slide over each other, because layers cannot slide over each other, right बच्चों? यहाँ पर layers को हमने disturb कर दिया है. And why layers are not going to slide over each other? Because due to the different size, due to the different size of atoms, right? Due to the different size of atom, you can say that इसको आप atomic size भी बोल सकते हैं और atomic radius भी आप इसको बोल सकते हैं. Atomic size and atomic radius. Atomic radius क्या होता है? The distance of you can say that distance from nucleus to the last shell, right? So आप इसको atomic size भी बोल सकते हैं, atomic radius भी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पे slide नहीं कर रहे हैं. अगर ये metal के ही हैं और ये mixture metal का ही है, तो they will be a good conductor of electricity as well. Same होंगे, conduct electricity very well, it will conduct electricity very well, right बच्चों? Electricity conduction में difference नहीं आएगा, सही है? ठीक है बच्चों. Then if you talk about some examples of alloys, so brass is one of the example you need to keep remember. Brass is actually one of the, you can say that, alloy, and it's a mixture of copper and zinc. It is the mixture of copper and zinc. So you need to keep remember the constituents of brass. So if you talk about the constituent, यानी के part के इस पे ये किस पे बेस है, तो ये इन दो चीजों से बना हुआ है ब्रास, ठीक है ना? किस किस से? कॉपर से और जिंक से, ठीक है बच्चों? And then if you talk about nickel, if you talk about stainless steel, this is one of the type of steel, stainless steel. If you talk about this, so इसके constituent क्या होंगे आपके पास, यानी कि ये किससे बना हुआ होता है? तो देखो, स्टील मेनली बनी हुई होती है आयरन से बच्चों. स्टील आपके पास मेनली किससे बनी हुई होती है? आयरन से बनी हुई होती है. बट वी हैव सम अदर एलिमेंट्स ओवर देयर एज वेल. We have chromium over there, we have nickel over there, and we will have carbon over there as well. And it's all about our requirement. हमें चाहिए क्या, हम उस हिसाब से दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है ना? डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं आपके पास एलॉयज के, तो यूजेस के हिसाब से हम उनको मेंटेन करते हैं, हम बनाते हैं उनको, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? जी सर. Then you can say that the alloys are harder. So steel जो होगी वो iron से बहुत ज़्यादा harder होगी, and due to its different atomic size, right? उसमें जो different size के atoms हैं वो ये काम कर रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं? उसको वो जो sliding से बचा रहे हैं, तो उसके अंदर जो malleable की property है उसको खत्म करके उसको sliding से बचा के उसको harder कर रहे हैं. So this is one of the use of alloy. You can say that हम alloy क्यों बनाते हैं? हम उसको इसलिए बनाते हैं कि हम metals को hard कर सकें, ठीक है बच्चों? स्टेनलेस स्टील जो होता है बच्चों, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? स्टेनलेस स्टील का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो आपके पास होगा वो घरों के अंदर कटलरी में इस्तेमाल होती है. सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील कहाँ इस्तेमाल होती है बच्चों? कटलरी में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो हार्ड होती है, ठीक है ना? और वो रेजिस्टेंस से, जो आप कह लें कि रस्टिंग से रेजिस्टेंट होती है वो, ठीक है? इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है घरों के अंदर यूज ये है. और उसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि किसी भी एलॉय का क्या यूज हो सकता है, तो एलॉय के अगर आपको यूजेस अगर आइडेंटिफाई करने हैं, तो एलॉय के यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो अपीयरेंस को खूबसूरत करने के लिए हम एलॉयज बनाते हैं. जैसे कि आपके पास ब्रॉन्ज के मेडल होते हैं, वो हम क्यों बनवाते हैं? क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से, ठीक है ना? इसी तरह हम समटाइम
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं, जस्ट लाइक अ सोल्डर। जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स पर सोल्डर वाले सोल्डर यूज कर रहे होते हैं, वो दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट का सोल्डर यूज करते हैं। सेम एज इट इज स्ट्रेंथ के लिए भी हम बनाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंथ हार्डर करने की, जैसे एलॉय हम यूज करते हैं, हम स्टील यूज करते हैं घरों में ताकि वो हार्डर हो, ठीक है ना। उसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंट हम उनको जंग लगने से भी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके जो कॉइन्स होते हैं, देखें वो कॉइन्स जो हैं वो भी एलॉय के बने होते हैं, और वो कभी पानी में, कभी इधर उधर, कितनी जगह पर वो खराब गंदे हो रहे होते हैं बारिश में इधर उधर, लेकिन उन पे जंग इतनी आराम से नहीं लगता। इट विल टेक टाइम टू बी रस्टेड। बहुत अच्छे से कॉइन्स को जो है बनाया हुआ होता है, उसमें हम इस तरह की मेटल्स ऐड करते हैं जिससे वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Sir, can you explain the strength part again? Strength is going to be harder ना, for suppose if you are using any metal which is malleable, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इफ यू हिट आयरन सो इट विल बी लाइक molded, और इट विल बी लाइक चेंज इट्स शेप। वो malleable होता है ना, थोड़ा सा चेंज कर लेगा अपना शेप, जो है ना, थोड़ा सा खराब हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन जो स्टील की चीजें होंगी उसको अगर आप हिट भी करेंगे तो इतनी आराम से वो नहीं मुड़ेंगी। इट विल टेक मोर पावर टू मेक देम डिस्ट्रॉय और टू मेक देम change their shapes, right? So they will be strengthened if you are using a different size of atom. So again you can see this that they are like, वहां पर जो layers हैं वो अब एक दूसरे पे slide नहीं हो सकती हैं. That is why they are going to be harder and stronger, right? Yes, sir. Then we have some uses of metals as well. सिर्फ metals की uses हैं अब जो हम बात करें, they are uses of metals. अगर आप metals के uses की बात करें बच्चों, तो metal के uses क्या होते हैं आपके पास? Just look at over here. For suppose if you talk about aluminum, so aluminum जो होता है आपके पास, सबसे अच्छी बात ये होती है कि aluminum जो है manufacturing of aircraft में use हो सकता है. It can be used in the manufacturing of aircraft, in the manufacturing of एयरक्राफ्ट बनाते वक्त हम एल्युमिनियम को यूज करते हैं, और उसकी वजह क्या होती है? उसका रीजन होता है लो डेंसिटी। जो एल्युमिनियम होता है वो स्ट्रांग होता है, और इवन उसकी डेंसिटी लो होती है। दैट इज व्हाई उसका एक फायदा है कि हम उसको एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, राइट बच्चों? Yes, sir. And then aluminum can also be used in, you can say that, overhead electrical cables. It can be even used in overhead electrical cables, right? और इसकी भी वजह यही है कि ये एक तो अच्छा कंडक्टर है, और साथ साथ जो है इसका जो लो डेंसिटी है, लाइट वेट है, तो ऊपर इजीली हैंग हो सकता है, ठीक है ना। लो डेंसिटी एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कंडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है, तो इट्स अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. That is why it can be used in cables, and also it has low density, so it can easily hang on the poles, so it will not like heavier नहीं होगा, उस पर pressure नहीं आएगा poles के ऊपर, right? Then aluminum can also use in food containers. ये food containers में भी use होता है, as we know that their unreactivity, वो unreactive होता है और resistant to corrosion होता है इस वजह से. So you can say that resistant to corrosion. Corrosion से बचने के लिए आप different metals और different चीजें use करते हैं, but aluminum itself corrosion से बचाने के लिए helpful होता है, so you can use it directly as a food container use. So we have three uses of aluminum. And then if we talk about copper, so copper is a good metal used for electrical wires because of its good electrical conductivity and ductility, right? So you can say that copper used hota hai in electrical wires because it's a good conductor and ductile, right? Good conductor and it's ductile, so it can easily shape in small or thin wires. So that's why we can use this in electrical wires, right? So these are the reasons and their uses why the specific metal is using for that purpose. So you need to keep remember these uses and the things, so it will be very helpful for you for past papers questions. Yes, Bachu, everything is clear for all of you? Yes, sir.